होल्ड लायक सोल अपने लिए वो ऐसा ही है भाई। उधर मरना मतलब कोई भी आके मार सकता है, उधर फाइट ले सकता है। कोशिश नजर आ रही है। रिस्की फाइट्स है उधर, नेडिंग वेडिंग का ना। प्लेयर को गॉब्लिन को वो बट अगर गड्ढे अच्छे से होल्ड है देख तो, नहीं पाया था। अगर गड्ढा अच्छे से होल्ड कराओ तो कोई आ नहीं सकता वहां पे। तैयारी तो जरूर करनी पड़ जो है वो करनी चाहिए थी हर टीम को, लेकिन कुछ टीम्स की तैयारी अभी भी उस तरह से नजर नहीं आ रही। बिकॉज अगेन कुछ टीम्स के लिए मैं समझता हूँ कि जिन टीम्स को पता था कि हम जादूगर इनवाइटेड हैं, चंडीगढ़ शायद है। वो इस चीज में जादूगर कॉन्फिडेंट थी कि जिस तरह हम विनर्स हैं अपनी चंडीगढ़ एग्जिट में तो के, महंगा होगा ना, हमारा मतलब सामना जो है वो हाँ विनर्स के साथ ही वगैरह। होगा। बट भी खेल रही है, आई मस्ट से कि यहाँ बनाने ही पड़ेंगे। नहीं हो तो बैन पे चलते हुए। अब बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करना तो फिर चाहूंगा, हमारी भी लेकिन वीडियो जिस बन तरह जाएगी, मैंने बात की ना कि अलग से ST लॉजिटेक के का कैमरा। वो उनका कभी कोई टूर्नामेंट में बुरा उन्हें हम खेलता हुआ देखे हमेशा से। जिस दिन से मैं ST को देख रहा हूँ, जब से वो एस्ट्रा अकेडमी थे, तो उनको तब से बहुत मैं देख रोटेट रहा हूँ करना उनको। पड़ेगा, बहुत एस्ट्रा ज्यादा। अकेडमी से ST का सफर उनका बना, तब भी वो फॉर्म में थे, बट अभी जोन भी। एंट्री आप इजी हो जाएगा जिस भी ऊपर से। टूर्नामेंट में देखें, हमेशा ये टीम इन फॉर्म नजर आती है। अब जिस चीज़ को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा उनका, उनकी ऑब्वियसली वो उनकी डेडिकेशन है और उनका हार्डवर्क, और साथ साथ वो जो हर बार तैयारी कर कर आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस से पता लग रहा होता है कि हर लॉबी की टीम है वो। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो रीजनल टूर्नामेंट्स में डोमिनेट, रीजनल लेवल पे भी डोमिनेट करते हुए देखे हैं उनको हमने, साउथ एशियन लेवल पे भी डोमिनेट करते हुए देखा है। उसके बाद जब मीना साउथ एशिया आता है, वहाँ पर भी वो डोमिनेट कर रही होती हैं। फिर जब उनको ग्लोबल के लिए इन्वाइट आएगा, हाँ बोल, वो मॉर्फ वाले को तो साउंड ही नहीं आया, उसको तो पटक दिया उसने। परफॉर्म कर रही थी। लेकिन साथ साथ दोस्तों RSC के बारे में बात भी करेंगे कि RSC की फाइट हुई जहां पर उन्होंने किल कंफर्म कर लिया। देखो भी ऐसे ही पटक दिया लोग। ब्लड है, फर्स्ट ब्लड जो है इस मैच का RSC की मैं तरफ जा रहा पटकता हूँ, मैं है। लेकिन पटक वापस की से अपने खाता सवाल की नहीं तरफ हूँ। आऊंगा, RSC की तरफ ये सवाल पटाखा है। मैंने तो ये बात ही खस की है कि उनकी तैयारी ही वो वजह है कि वो तमाम लॉबीज में डोमिनेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन सी चीज है जो कि टीम ST को तमाम ले जाती है? इस सवाल की तरफ हम ये सवाल हम मैशन मेरे की तरफ से जो कजन भाई भी आए। चिराग से पूछना कब आ रहा है तू, कितने बजे पहुंच रहा है? फाइट्स नहीं ली जाएंगी बिकॉज़ अभी हाँ, एक आगाज सेकंड। मैच का 5 ही मिनट हुए हैं। मैच के ऑब्वियसली 5 से 7.5 मिनट बहुत अर्ली रोटेशन। दी हैं, या फिर कुछ टीम्स देखो पुरानी टीम अर्ली रोटेशन वापस मारती है। ऐसे ना चुके हैं। आपसे मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि क्या वो वजह है टीम घर से 11 बजे निकलूंगा पाजी कल। करती है तमाम टीम्स? बहुत लेट है वे। ST अगेन आई बिलीव जो इनकी शुरू से ये टीम रही है और ये प्लेयर्स तो फिर भाई कह रहा है 10 निकल लेंगे लास्ट टू लास्ट। एट द सेम बहुत टाइम लेट है वे। उनके लिए वर्कआउट कर रही है वो है उनका 10 बजे निकलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे? वो चीज 2 बजे 2 बजे। मेरे घर पे मुश्किल फाइट पूछना घंटे 4 घंटे का रास्ता तो होगा। एट द सेम टाइम उनका जो एक मैं बोल रहा हूँ कि 4 घंटे लगेंगे तुम्हें आते आते। उनके लिए 4 बात भी खड़ी करता है। एंड सुन, चीज अगेन मैं समझता हूं जो हाँ। फैक्टर है बहादुरगढ़ से के अंदर वो एक रोहतक, रोहतक से गुहाना, गुहाना से दूसरे प्लेयर जीन, जीन बहादुरगढ़ से से रोहतक, रोहतक से गुहाना, गुहाना से जीन, जीन से अगेन उसके माइंडसेट को किस तरह से हाँ। वो तो फिर fight यहाँ से करेगा, चलेंगे 10 बजे टास्क फुल फाइट स्पीड में, सारी चीजें मतलब आराम से वो सेफ्टी के साथ वो खेलते हैं। बेल्ट लगा के। अगर तुम ढंग से आए तो तुम 3.5 घंटे में पहुंच जाओगे। खेलना एक साथ काफी जो है वो उनकी एनर्जी क्रिएट करता हुआ नजर आता है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। चलें, इस बात को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि साथ रहकर खेलना और एक यूनिट बनकर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने टोंग जापो को हमने थोड़ा सा किसी न किसी टेंशन में आते हुए देखा ज़रूर, क्योंकि उनके आसपास प्लेयर्स मौजूद थे। टोंग जापो के बाय बाय बाय, ये क्या पिटाई हो रही है बताया? इट्स नॉट दैट फेज ऑफ द गेम जहां पर आप एक ज़बरदस्ती की फाइट के अंदर जाएं ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत जबरदस्ती फाइट हो रही है टीम की। साइड पर एम्पाला के आसपास टीम 8 ऑन वर्सेस द इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स काफी यहाँ पर जो इस वक्त करीब है और बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया जाता है इस मैं कहना चाहूंगा टॉमी के स्प्रे को ग्रेनेड के साथ। ब्रूनो यहाँ पर ये नॉक निकालते हैं, किल कंफर्म भी कर पाएंगे, लेकिन डी फोक्स को देखें आप, वो एक डिफरेंट एंगल से आते हैं, एक नॉक निकालते हैं, मजीद एक्सरे का भी यहाँ पर स्प्रे चलता है, दोनों निकाले जाएंगे, 1v3 जाएगी। काफी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं पहले नॉक के बाद, लेकिन उसके बाद मजीद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और जाएगा बैरन के बैकपैक में किल जाएगा और यहाँ 4 के 4 किल्स कंफर्म करते हुए टीम में डेनिस बैंक वाइल्ड कैट के प्लेयर्स एक अच्छी फाइट निकाली जाती है, जहाँ पर पहला प्लेयर गवाया जरूर, लेकिन डिफरेंट साइड से आने का ऑलमोस्ट 4 सिचुएशन को डील किया गया यहाँ पर टीम IWC की तरफ से। एंड बेहतरीन एग्जीक्यूशन, अगेन दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने सारी फाइट को संभाला, लेकिन RSG का
ऑन पॉइंट बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आरएसजी और मॉर्फ की इस फाइट के अंदर, और मॉर्फ के फजर यहाँ पर मौजूद हैं, डीडी को ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं और उनको वहां पर नॉक कर सकते हैं। लेकिन पहला सर्कल हमारे सामने शिफ्ट होने वाले लेट रोटेशन करती हुई हमें 2 से 3 टीम्स नजर आएंगी सदर्न साइड से VGS और साइड। अगर हम साउथ वेस्टर्न साइड पे देखें नहीं 4R भी कटेगा, 4R भी वो मूव करती हुई नजर आएगी। निग्मा की स्क्वाड मूव करती हुई अल्पोजो से टुवर्ड द मैप, एंड अगर सर्कल अपर नॉर्थ अरे सेंट्रल आ रहे हैं ड्रोन, इसमें तो जा ही नहीं रहा, इसमें सारी सेंट्रल आ रहे हैं। सर्कल यहाँ पर एक सेंट्रलाइज शिफ्ट करता है और वाटर ट्रीटमेंट सैन मार्टिन हासियांदा सोल का फाइट ना हो जा चुके हैं। उनके जो डिफेंस था वो इतना रॉक सॉलिड नहीं था। इंडियन नेम कैसे होगा इनके रॉकी जॉकी? और यहाँ पर मॉर्फ अपना एक प्लेयर बल्कि दूसरा RSG 2 किल्स अपने बैकपैक में डालती हुई नजर आती है। बिल्कुल जी, आरएसजी की तरफ से 2 किल्स अपने 1 किल अपने बैक में डाला चाहता जरूर है। अभी दूसरा वहीं पर इस वक्त सर्कल से बाहर 4 टीम्स हमें नजर आ रही है, जिसमें टीम डीडब्ल्यूसी, VGS, निग्मा गैलेक्सी एंड 52x रेज। निग्मा गैलेक्सी प्लेसन पॉइंट्स को हमेशा तरजीह देते हुए नजर आते हैं, उनकी तरफ से किल पॉइंट्स की तरफ फोकस इतना नहीं किया जाता। लेकिन अभी जिस पायदान पे मौजूद हैं, इनको बैक टू बैक 2 से 3 मैचेस में वो नजर आते हैं या नहीं नजर आते, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक वो पॉइंट टेबल में टॉप पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन लुक एट दिस रॉकी के ऊपर जिस तरह से जंप शॉट देकर डैमेज देने की कोशिश की डीडी की तरफ से, वो काफी शानदार था। लेकिन डीडी उसके बाद अपनी उजी के साथ यार ये फैल्कन क्या मार रहे हैं, बैक साइड से डैमेज देना चाहते हैं। फैल्कन्स को अपने होम ग्राउंड में खेलने का फायदा बढ़िया मार रहे हैं फैल्कन कि उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए क्राउड हमेशा शेयर करने के लिए तैयार होगा। यहाँ वो इधर किल करके मजा आता होगा जब क्राउड चलाती है, ये चीज बड़ी फुल कॉन्फिडेंस आता होता है। फैल्कन का पिछला मेरा मार भी हमने देखा कि बेहतरीन निकल के जाता है। ये टीम मेरा मार को बड़े अच्छे तरीके से खेलती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं बैक साइड के ऊपर लैपी को अपने सोल भी इस सारी फाइट के अंदर बहती गंगा में हाथ साफ कर लेट्स गो। और नहीं असली मारा के अंदर we are down to 17 teams, 61 players are still alive और टीम मैंने आपको वैसे मना मजा आ जाएगा, किया बस तो इधर आएगा तो अपन मजा आ जाएगा, फुल रील्स एंड ऑल प्रॉपर सब कुछ बना सकते हैं अपन। बट वी आर सीइंग रील तो मैं इंपॉर्टेंट एरिया है, बड़ी जल्दी बना और टाइमली रोटेशन करने के बाद टीम ओमेगल। हाँ मतलब मैं जितना फेम तुमसे चूज सकता हूँ मैं चूज के ही टीम बना लेंगे, 10-12 दिन अपने क्या बना लेंगे, टीम बना लेंगे बीजीएमआई की अच्छी सराउंडिंग से दोनों रोटेशंस के ऊपर वो एटलीस्ट ट्राई आउट करें कुछ किल्स निकालने की। तू तो है भी नहीं अभी टीम में, मैं भी नहीं। फायदेमंद तो लेकिन अपन नॉर्थ साइड के ऊपर 52x स्पोर्ट्स भी काफी मैं मतलब हूँ तो, लेकिन साउथ साइड के ऊपर फाल्कन का स्क्वाड जो कि थोड़ी देर अभी तो कोई किसी टीम का नहीं है वैसे, कोई किसी का नहीं है, अब तो सब फ्री एजेंट है। एक और टीम भी मौजूद है, सो मैं बात रहना पड़ेगा करके बनाता हूँ एक टॉप टियर टीम में। मौजूद लो जी जोन कट गया, सबसे गंदा जोन, मेरे को अच्छा नहीं लगा। कटा ही नहीं अभी ओ बेंच कट गया, अपना पेपर कट गया वो लाऊंगा साला। और लेकिन ये भाई गंदा जोन है, इसमें ना जिसको जोन एडवांटेज मिला ना वो मस्त भाई मारेगा ही मारेगा। ये मर गए के ऊपर थोड़ा सा साइड के ऊपर शिफ्ट सर्कल का पड़ा जरूर, लेकिन यहां एक बार फिर से सोल तू मत बोल ठीक है, हमने प्लेबैक स्पीड आपने 2x कर रखी नहीं करी नहीं, तू गेम कंप्लीट मत पे ज्यादा कहने की एक टीम की डिमांड होती है सर्कल में किसी भी एरिया को होल्ड करने की, वो इस टीम सोल के पास है और इस डिमांडिंग एरिया को कैपिटलाइज किस तरह से कर पाते हैं। लास्ट मैच में मैन एडवांटेज नहीं था टीम सोल के पास, अभी चारों प्लेयर्स जिंदा हैं। अब उन चारों प्लेयर्स को जिंदा रहने के बावजूद सर्कल में अच्छे प्लेयर्स सोल करेगी इसके अच्छा बॉडी ट्रीटमेंट का जोन है, बट लेफ्ट राइट अपना थोड़ा लेट आए नीचे आज के दिन के खत्म होने के बाद साथ बैठकर जो है वो डिस्कस करना चाहिए कि क्या ऐसी गलती है जो वो कर रहे हैं और जो कि वो शायद अगर दिनों में रिपीट करते हैं तो उनकी जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फिलहाल ये मैच है वो उनके लिए अच्छा साबित हो भी सकता है, उनको सिर्फ एक अच्छा मैच चाहिए, एक कंटेनर चाहिए और वो पॉइंट टेबल में अच्छे पैदल पर आ जाएंगे। अरे जुराब पहन के बैठा है अंगूठे में कि हमें अच्छा खेलती हुई टीम हां देखा अंगूठा जुराब एक अच्छा मैच हमने देखा कि लास्ट मैच टीम टैम्बो गेमिंग के लिए भी बेहतर, इससे पता नहीं क्या होता है ये मैच किस तरह से इनके लिए अच्छा साबित होता है ये देखना हमें कुछ ही मिनटों में हमारे सामने जब वो सोल के बाद गोल्डन आउट निकाल दें पैन को, मेरे को फुल
गूज़बम्स आ रहे हैं कि मार दो सबको मार दो। सर्कल में बगीज लेकर मूव करते हुए टीम नजर आ रही है और एजेस पर चल टीम हमें तोड़ दो बैन, तो मारो मत, तोड़ डालो तुम लोग। यहाँ पर विजुअल गेमिंग की बात, वेम्पायर स्पोर्ट्स की बात करें, उनके प्लेयर्स टीम टीजीबी के ऊपर लैटरल डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जी के सोल है किधर कोई फिलहाल किधर होल्ड कर बड़ा ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि वो प्लेयर रोटेशन करके सर्कल में अपनी जगह ना ओ भाई ऐसी हेल्थ बचती है ना। रोटेशन के लिए जितने भी रिसोर्सेज मैं समझता हूं कि डाउन किए जाएं अगली टीम के बेहतर रहते हैं, लेकिन टीजेबी एंड आर भाई कैसे शाउटिंग हो रही है पीछे से, मां थी पता कैसे शाउटिंग हो रही है, ओ ऐसी शाउटिंग हो रही है, की तरफ से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ प्लेयर को भी अप करना है। क्लैपिंग हो रही है अभी पूरी। इज डाउन टू पता है देखा मैं इसे, वो बोलते हैं मैं भूल गया, चैंटिंग हो रही है चैंटिंग। कर चुके हैं बॉक्स ऑन द अदर साइड, दे आर स्कैनिंग दिस इंग्लिश में कास्टिंग करते ना। हमारी स्क्रीन के ऊपर शॉट आता है, मैं क्या कास्ट, मैं मेरे को कास्टिंग आती होती तो मैं कास्टिंग में बन जाता। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी घरों पर बैठे हुए सारे जो एक्शन है उसमें एंजॉय कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम टीम इस्तांबुल वाइल्ड कैट सामना हो गया। ये ड्राइवर जो भी होगा मेरे से बॉगा लिखाएगा, पकड़ी जाती है एक और मैं टीम का होता लो टॉस जाता हुआ यहां पर डीडब्ल्यूजी के दो प्लेयर्स के पीछे स्प्लिट के अंदर फाइट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी एक एंगल बनता हुआ यहां पर रे का, लेकिन रे को यहां पर शट डाउन किया जाएगा यूएससी के प्लेयर की तरफ से। एक थर्ड पार्टी भाई ये क्या है भाई, पता है मेरे को कभी कभी लगता है भाई हमारी ना गन फाइट वगैरह तो एटलीस्ट मतलब है बहुत अच्छी। हाँ मतलब बस वही है थोड़ा, चलो छोड़ो फिर मैं कमेंट नहीं करता, लोग मेरी मार रहे हैं बैंड के खेल ले फिर तू। इस सारे फेज के अंदर अभी तक के लिए चांसेस हैं कि वो सोल फेवर दो ना के बाद हीलिंग भी इजीली लगा सकेंगे, लेकिन जूनी के ऊपर नेट जाता हुआ सोल फेवर दो ना। नाइस D4X यहां पर कोशिश करे कि जूनी को अपने भाई डैमेज बहुत है यहां पर पिन करके रखा जाए, लेकिन प्लेस भाई इसमें भी ना वो ना चाहिए कि अगर तुम बूस्टेड हो ना तो तुम्हारी जोन के बाहर हेल्थ नहीं जाएगी। भाई क्या मजा है ना, क्या इंटेंस हो रहा है डाउन करते हुए एंड टीम DW ये आइटम आ जाए बढ़िया, फिर बूस्टर उठा के बाहर जोन के बाहर लड़ते सर्वाइव करने की, रहो। बट टीम वाइल्ड कैट्स दो प्लेयर्स अपने लूज कर चुकी है लास्ट। बिल्कुल, लेकिन आपने सर्कल के शिफ्ट को अगर आप देखा हो, अगर आपको याद हो, लैग कर गया से बनती हुई इस मैच के अंदर सर्वाइव करने की, बट टीम स्काउट भाई बैठे हैं देखो, दो प्लेयर्स अपने लूज कर चुकी है। बिल्कुल, लेकिन आपने ये सर्कल के शेरो शिफ्ट को अगर आप ऐसे ही लग रहा है ना, बिल्कुल स्काउट भाई बैठे लेजिट लग रहा है भाई। Get inside that circle, and on top of that, I mean, Star Wars Esports, they really haven't had to do much. We haven't seen them much, but guess what? I'm pretty sure they're gonna set themselves. ओ भाई सातों उंगली दबा दी। The teams that are looking good, really good right now is Falcon, it's Soul, his four rivals. Enigma Galaxy in a huge fight here with Vampire Esports, taking down Fluke. Let's see how many more he can get. No, it's gonna be found that फैल्कन वाले तो फुल चला रहे हैं, जब फॉल्कन वाले मार रहे हैं किसी को। Enigma Galaxy out in 6. फैल्कन उधर की है ना भाई। Now the coming minutes here, we're gonna see so many. ये हम जब उधर थे दुबई, ये फैल्कन हमारी उधर की थी, अच्छी टीम थी फैल्कन। Yeah, I mean, with the 18 teams that we have right now. तुम अच्छे क्यों नहीं लग right रही? now, but we start with. You're just मतलब मैं तो अच्छा था, बाकी लोग पता नहीं कोप अप नहीं कर पाए शायद उनके साथ। and I'm actually loving it. I'm कोई ना, love this kind of fights that we're getting. टाइम लगता है ना मेरे को, कोई ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका भी। Galaxy, I know they ended up losing there, but I did appreciate that player. तुम्हारा आईजीएल कहां से रोटेट करा था? Expected the other player to come in from. आईजीएल करा था ना हमारा It 25 happens, किलोमीटर की man. रोटेशन। It's Vampire Esports. You can't really be too harsh on yourself with the way Vampire Esports is playing right now. रॉक्स भाई के बारे में कुछ नहीं है। वैम्पायर स्पोर्ट्स का है, Great game found. विजय अच्छी जगह पे है, सोल को मार सकती है, बट सोल मरनी नहीं चाहिए कुछ भी करके। सोल को ये मैच फाड़ना है क्योंकि बहुत फेवर्ड है, बहुत अच्छा पकड़ लिया वो लोग, जल्दी आ गए। मैं बोला था ना टाइम लगता भाई है एसटी करने वाले का एक नॉक और स्लैम इनका। ओमेगा ने रीड कर लिया और उसने वो करा, जल्दी जोन पकड़ना। This Adrian on my- screen. I was gonna say, I'm not sure about that spot. वही इसी बग्गी देख। for Esports. I'm hoping that they do decide to go somewhere else. देखा Kid is on them. दो बंदे बैठ के जा सकते हैं, दो बंदे लटक के जा सकते हैं साइड में। On the horizon behind them too. This is gonna be interesting what's happening to them because Vivo Kid is gonna have to push at some point. They are Box. outside that circle. Yeah, the question सिर्फ is, do they बॉक्स drive को तो मैंने fast or नहीं do फोड़ they भी drive किया, close? चलो छोड़ो मैं Reach फिर the तारीफ नहीं situation करता। with this now situation with Box and Vampire Esports. अंदर का अल्ट्रॉन बाहर आ रहा है तेरा। That's a nice shot from Stone straight into the helmet. It's gonna save him. किया तो किया, क्या कर सकते हैं He's भाई। gonna be trying to get into the circle. मेरे को भी तो मारा है तूने जानबूझ के। He cannot go deeper than भाई मैंने that. नहीं, That माँ is कसम तुम्हें down मारती by मुझे जो Kian देशद्रोही बुला दिया था ना लोगों ने। 14. मैंने कहा भाई मैंने नहीं मारा भाई। भाई सोल को फेवर जाएगा, सोल को फेवर जाएगा 100% व्हाट्सएप पे It doesn't matter which
gun he's using. And guess what? अजय आपके मुंह में घी have to शक्कर push in, ल- and they decided to just they didn't decide to drive by. They मेरे को decided to zone just दिखी push कहाँ गया बे? into Sour Esports. And guess what? Back to back. it's अरे an सोल interesting बाहर हो गई fight क्या this zone year के fuck? as we do see हाँ the fight. क्या zone के बाहर हो गई? Sour Esports trying to back him up. पता नहीं दिखी नहीं रहा मेरे को zone नहीं दिख रहा जोन में हाँ जोन के बाहर हो गई एज पे Because that was almost on the money. Yeah, it's almost like the director out there saying 1 2. चल इतनी काली दुकान Try to get some of that and put it on. That's a lot of damage being on to Cielo. And that नहीं, is नहीं, the सोल amount that's जोन में Ryuki है, on 13. शायद है। 0 Ilims, हाँ? considering that their early position शायद है was एज pretty है good. सोल अरे एज हाँ एज पे रहेंगे वो लोग अच्छी जगह पे रहेंगे वो लोग पे रिज होएगी पंप की Decides to go for the full बस उनको थोड़ा वेट करना है ऐसा ना हो कि पहले ही जोन में आ जाओ पहले जोन में आ गए तो वो लोग फटेंगे inside उधर the circle in the middle and a little dip. It really doesn't work out that well for them. 7. I mean, J-Way actually decided to take a shot on. इन पे जोन बढ़िया है Why would you do that? फल्कन वाले सबसे अच्छे जोन में मेरे मूवमेंट भी कर सकते हैं स्काउटिंग एरिया भी मिल रहा है पेरोस वाले तो फिर भी थोड़ा डर में होंगे कि स्लैम आ जाए फल्कन वाले बेटर है Squad is putting pressure on them. One shot, putting out a lot of shots. मारो, मारो। Force is trying to sneak in on the northern side. Falcon पे चलाएं क्या नहीं? Falcons. ये लोग प्रे फैल्कन करेंगे कंपाउंड Squad, they are नहीं putting so फैल्कन much अच्छी जगह पे pressure बाजी सबसे onto बेस्ट Donuts पोजीशन now. फैल्कन ही है They want them off this high Falcon ground तो here. They कुत्ता are बना right सकती है inside पूरा the next गेम circle, but they are waiting for long enough. Maybe it's because the virtual gaming हाँ squad फल्कन ही wants सबसे this अच्छी जगह new पे area that Donuts has decided to take. Let's see what happens with them. Naruto goes down. Lin goes down. बाजी ये देखो ये तो आप जैसा लग रहा है फुल And Shrebs तेरी finds माँ Massive का from Stalwart, छोड़। but they have to rotate. Missile. trying तो to मैं भी see मावी से मिसाइल कर दूंगा अपना And now virtual gaming squad they have चलो they दो have to मैं leave. देखो दोनों That है means that Donuts are able to survive. Yeah, with virtual gaming. मेरे को गॉब्लिन के नाम पे पता है एक टाइम के लिए क्या लगा 16 मिनट After Donuts, they are gonna have Team Falcon. Nice kill आना right चाहिए, now Soul का is आना चाहिए on a kill. tear. Even though they are currently just sitting, Nice. they're making sure they back up everybody. You do see Team Soul back to back just decide to send it. J7 being able to push it. Is he gonna be able to make it? He's not able to make it. You can see a shot being able to secure that element, and that is huge because if we would have made it in there, oh man, he would have been able to get some angles. पोलो को भी मारो पोलो को मार उनका This next circle happens with all the teams are being pushed in. 52 inside the gas Oh. station. That is another player. ओ भाई ये going भी down. अच्छा ये कंपाउंड जोन में तो ये भी Forced बहुत to मार go back सकते to हैं back. थर्ड They कंपाउंड won बहुत them in फायदा है only बे 12th place, so not a lot of points from them. ये एसटी और वीपी की फाइट हो गई दो टॉप टीम की फाइट हो रही They है are on the siege by Stalwart. लो ये मार दिया Meanwhile, इन्होंने Fox आग is also लगी third सब fighting them on the edge here. That's a good amount of pressure. 52 also in the kill feed. तीन जल गए क्या आग में What can you do in this situation here? Fluke taking some damage. This is kind of clever by Stone here. Try to get out. Talk about And the he moves jumps there out. from Stone. Being able to throw in the Molotov, make sure they back him up, getting some knocks too with the Molotov, and he's एसटी का बेचारों का गलती मॉली पड़ गया secure those Ilms. Huge play. ठीक है था मॉली Out of तो बढ़िया Vampire Esports. That's the fight that we've been wanting to see. And guess what? Box Gaming realizes, hey, this might be the time. If we're gonna third party, let's third party right now. और वो कंपाउंड का वो जोन में Push है the action. Yeah, perfect time for them to. ओ राइट वाला कमांड जोन में बॉक्स का House the longhouse here. Stalwart F. trying to get out. Still a F. knock in there. Stone cannot confirm it. He's outside. Top is on the other side. He healed up. The circle. This. ये सबसे ज्यादा हिट करेगा इनको अभी It's a mayhem on the northern side. Falcon even. बस फिर बॉक्स का चिकन है अल्ट्रॉन बॉक्स का चिकन है This is going to be an open. हाँ 4 महीने लगेगा और कंपाउंड CJB जोन में really भाई having a little bit of cover there. मार दिया लो एसटी का बंदा So देने Esports is going to be able to outlast Vampire Esports, but guess what? Box Gaming, this is going to be interesting how Action is going to be able to hold वो them बक्सों off. है तो सब ओपन हो जाएगा He has बिल्कुल already used a lot of utilities earlier with the fight with Vampire Esports. Box Gaming playing him slowly and finding the angles in here. बॉक्स वाले को पता नहीं होगा किधर है Ooh, being able to eliminate. मेरे को लगता है बॉक्स वाले को पता नहीं चल रहा कौन सा कमांड जोन में है 7 Ilms, Star Wars Esports is not हो another सकता है third place that we're expecting out of you, but I respect the amount of points that you guys are being able to put up in regards to Ilms. ओह All right, look at that Donuts with the revenge onto Virtual Gaming Squad. Basically another case of virtual. वो जो नॉक तू देखा वो जो एमपी वाले ने दिया दूसरे ने दिया है Gaming Squad just taken down as well. Donuts too. This is a rough situation for them. They had to get out of the north. कैसे मुंह खोला है उसने In this situation, healing off. He's actually inside the zone. मेरे को समझ नहीं बॉक्स वाले ने अपना बंदा आगे क्यों भेज दिया दोन The southern ये side अल्ट्रॉन of the circle. बॉक्स वाले कंपाउंड में नहीं बैठ रहे पता है Could be a great game for Bucks. उनको पता नहीं चल रहा अल्ट्रॉन The way right now, Team Falcon set पता है up, भाजी ऑब्वियसली it could possibly देख राइट में कंपाउंड लिया नहीं उन्होंने finish for Team Falcon. They still have all the 4 ले तो players. रखा भाजी कंपाउंड जोन में ही है डब्बे जोन में डब्बे डब्बे अच्छा वो छत They don't end up getting नहीं, knocked डब्बे- from डब्बे getting पड़े third रहते हैं party. जो। CJB, even though he was healing, एक he टैग decided to stand up a little bit more and just Omega keep 6 गया moving शायद। and end up pushing him. Team Falcon 15, needs to be 12, careful 10 with that more 4 मिनट ठीक ही रहा अच्छा They're डिफेंड gonna मैच get aggressive, but Team Falcon is just Falcon ने गॉड फोड़ being किया able to
secure that elim and moving upwards and forwards. That ये देखो right there ये बोल might रहा just था secure मैं them at least a top ये 3. क्यों भेजा लेने Another great performance on Miramar for Falcons. इन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया उसको भेज के अपने एक बंदे को आगे. Yusuf finding Pharaoh 52 in shambles right now. के चक्कर में ही मरेंगे देखना ये बंदा ही मरेगा 110% मर रहा है to make this next one in. Check, and they could potentially lose one player to it. And I think it's been so long since the TJB player has actually done something that he might end up surprising the team. भाई Falcon गलत खेल रही है बहन. Team Falcon, they saw Box Gaming all the way on the other side, and they're taking shots. The aggressiveness of this teams, and right now 52. वो शांति से बैठा है एक बंदा TJB. बॉक्स पे जोन कट गया. Two teams looking at you. बॉक्स वाले जोन में नहीं है I लेकिन. don't think you're gonna be able to survive from that. दो ही बचे हैं. TJB player, the one that's currently being able to survive, he might come into play later. बट एक बच जाएगा, तीन बच जाएंगे, तीन हो जाएंगे. Knows that he's there, but I'm not sure, Avenger. The question is, how much utility do they have? That's the decider of this one here. Now we see nades coming in. It is coming connection a मिलते ही good मर nade. They're जाएगा. never alone from. भाई टीवी ये क्या मार रहे हैं Falcon वाले? Another good performance from them now, but it means we're down to Bucks and Team Falcons. And this is going to benefit, if Box Gaming can get into the zone, is going to benefit him in a big way. You can see Team Falcon, though, is not slowing down. They're making the push. They didn't know that TJB player was there. They eliminated him. They were like, you know what, we need to... Basically, I didn't think he was going to survive that. The players are not focused in on him. They thought they're one of the other teams potentially to take him out. So Falcons slightly forgot about him. And let's see how far he can take this one for 52. 8 eliminations for them. He finds a box player, takes him down. Can he secure second place for 52? 52 esports currently just ruining the party for back him up. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑडियंस चलाएगी क्या? Perfectly. Team Falcons currently looking to take this win, ladies and gentlemen. They know where that player from 52 esports is at. Can they take it? You see Yusuf leading the charge. They know exactly where he's at. Ladies and gentlemen, Team Falcons able to get the win for Saudi Arabia. बहुत अच्छा खेल. Convert this one. Step it up and do an even better game on the second game of Miramar today. Here's 7. They got second place last time. 6 eliminations. And now they're able to take it home. भाई ये तो ऐसा लग रहा है रोल्स रॉयस वगैरह का है बैंड तो आगे वाला तो. हाँ ना? I'm about to go wild. माँ की रोल्स रॉयस फैंटम रोल्स रॉयस गोस्ट बैंड जैसे खड़ी होंगी प्लेयर जाएंगे बैंड उस गाड़ियों में. Guess what? Their team is currently showing up, and they don't just want to win this. They also want to make sure they qualify to that party event happening next week. Wow, what a win! The aggressiveness that we're just seeing out of this nice team, one. Welcome. They're not slowing down. It doesn't matter who it is; they're just going for it. Good. Super. Good खेल रहे हैं, good. The teams that are able to do well. Falcon को जोन से अच्छा मिल गया भाई. वो या तो वाटर ट्रीटमेंट आता जो आप बोल रहे थे, या तो उधर कंपाउंड जाता. वो कंपाउंड गलत चला गया. They were in that compound. They were in a situation where they're नहीं तो बॉक्स वाले कंपाउंड पे आ सकता. 3 जगह ही थे. Bucks able to get a lot of points out of this. Punchable. I want to go back to the fight between Star Wars Esports and Vampire Esports. I feel like that's going to be happening a lot, and I'm all here for it. That's a fight that I want to see hopefully in the next match as well. Right now, honestly, for me, 2 of the best teams of this tournament so far. And can Team Falcon continue to spoil everybody's party? Yeah, we have one more game to go, guys. That means that we have one more break. Let's go. Last game. Team India, each do last game. Short break. We're going to go to the amazing disc, and they're going to break this game down further. खींच के दो last game.
मणि बिगड़े ना मापिया मैं आया ठीक है अगले गेम में आ जा ला 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 Well, they've been close many times, but Team Falcons have been able to take themselves a big win, and we can hear from the talent room, everyone in the audience just cheering and rooting for them, but for good reason. This team has been fantastic throughout the entirety of today. I know, James, we were talking about how, you know, Vampire is definitely one of the strongest teams, and have proven to be one of the strongest teams. It's hard to catch up to them. Yeah. But I'm saying, Max, Falcons have been probably the most consistent team throughout today. Yeah, the only way a team can really have put some shadow down on the results of Vampire are going to be Falcons and Star Wars if they close off with a banger game, which is what we just got from Falcons. And we were talking about it a lot. We're talking about their edge gameplay. That was like the definition of a good edge gameplay in this Falcons. Like, yeah, it's textbook. It was almost Destiny. We just come off the back of talking about it on the previous Death segment, and then they convert with that. As you watch them break down each circle and each circle, you can't play center in this circle. It's so open south of water treatment. You've got, obviously, it was 52, right, that had the gas station, Yeah, actually. the gas station, yeah. Yeah, so we'll talk about 52 in a moment and how well they play things out, but the fact that Falcons then makes this edge play constantly work, and then is pushing in against this, just, well, it makes us look okay here at the desk. It makes us look like we're earning some money well, but you know what we're doing, yeah. Yeah, very, very impressed by them. I feel like that's kind of what you guys were theorizing, though. We were talking off air like yesterday about how we expect teams to play, because you can't really zone up or center up really early with 18 teams, or expect it to be a lot more difficult, or is this maybe something else we've discussed? Depends on the circle, right? Of course, and you know, we always have to take that into full account when it comes to this, but especially in a circle like this. Yeah. And we have seen previous games here, even just throughout the day, where we've seen a lot of heavy edge play, some successful, some not so successful. Falcon has shown us the trail of breadcrumbs to success with a lot of their edge play, and it's come to fruition in the previous game, not necessarily with a win, and it now comes to fruition in the form of a win. So we see that trend continue to develop. Yeah, Falcons make me think of like Indiana Jones. You know, when they have the skull and they have like the ants going all around. Like if they are playing edge, all the teams like, oh no, we're just going to go around. We are not fighting these guys. But looking at their player stats right now, like it is great to see the team perform on this same level. And Never Alone in particular has been also a really big standout player. And here being one of the top players is not really surprising. I mean, he might not be able to dunk basketballs, but he can dunk himself some eliminations. Oh, yeah. Yes, he can. And I think something that I'm glad that they didn't dunk as well was ascend towards center. It can be a bit tempting in a circle like this to be like, is the circle going to shrink away from us? Do we have to send to maybe even that gas compound, or maybe to a hay bale, or maybe to kind of a blown out car somewhere or something like that? But they're not doing that. They're still kind of holding strong, holding firm, standing their ground on these edges, sweeping teams, and then taking out teams as they continue to enter the next circle and the next circle. So I really like it. Yeah, I mean, the thing that they played here is they were staying on the eastern side. The moment Box Gaming are eliminated, they know, okay, this is in the bag. Now we can allow ourselves to be aggressive, go for the push onto Vaz. Vaz did do, really well. Respect to him. I thought, like, oh, maybe, like, it was hard at the end of the day. Well, you know, you're talking about him, so why don't we actually take a look then at 52 Esports in a second and take a look at their player stats. I did want to mention really quickly, by the way, the damage across all of these players. We've been talking, I think, for like a year about how there has been that transition of having those 1 or 2 superstars in your team to now you need everyone to be able to be a superstar at any given moment. Everyone needs to play well. You can't have those slackers or relax. And we do see, Vaz, you guys mentioned 834 damage coming through. Yeah, and that's what you brought up, right? That entire position here in the valley is not easy to play. There's not a lot of coverage. One piece of coverage is that gas station. And not only did they go to it really early, like they know the value of that position, but they were constantly taking shots because if a team pushes, it can be hard to defend. So they're just prematurely taking shots. Yeah, and as I was alluding to with the idea of potentially Falcons trying to do the send, which obviously they didn't, but like other teams will try and make those sends towards something that is so valuable like that gas station compound. Vaz, though, what a heroic effort from him to be able to pull a second place out of all that. He wasn't just shooting at Box, he was shooting at Falcons as well, whilst moving from terrain to keep himself covered. I mean, eventually he did go down, but securing a second place off the back of that after the circle moving away from gas station, very excellent play by Vaz. They were in last place, weren't they? Going to this match. Alongside back-to-back, they were pretty...
one of the teams that I was most concerned about because they won Pakistan without a chicken dinner. That's rare that you see that happen. And yes, okay, it shows a team that can be consistent. It shows a team that can be consistent about it. But there is that hurdle that you need to get over sometimes in terms of getting that chicken dinner to be able to become a great team. They didn't get the chicken dinner here. That's fair because Falcons was playing an excellent game. But if other things had gone slightly awry on the east side of the circle, that could have been 52 getting a chicken dinner here on the international stage. Yeah, I mean, as you said, Jason, right, they were last place before this game. They were really struggling so far, but this was their redemption game, and I think that confidence boost for not only the last game of today, but also the next 2 days to come. Max, you talked about VGS coming in from Africa, right? And how they're looking at this as, we're not going to win. We're not going to win most likely. But they want to use this as a learning experience. I wonder if it's the same thing here for 52 Esports, because if I remember correctly, they were always consistently in like top 3. But as you said, James, right, they never got a chicken dinner. Yeah. If they can replicate that same level of consistency here now on an international stage, that'd be ridiculous. But also for a team like this is also a phenomenal learning experience. And I don't know if you've had the chance to talk to them to know if that's their plan. Unfortunately, not more happening on social media. They want to beat Stalwart. You know, that is currently the team to beat for them. But it's like any team, right? The first time you make it into an international event, like you will want to take that learning experience, a big exponential learning curve. They could have a surprise like this game. But it's going to time to get there regardless. So still a really good game. Hopefully their confidence is going to jump up a few notches and they can stay up there for the time being. Okay, well, I think it is time to head over to our STC match rankings in a second here to see how many points all the teams did get. Again, Falcons able to close things out with a lot of eliminations, with obviously the chicken dinner. To be fair, we've actually seen a lot of chicken dinners today with they typically don't go hand in hand like this. Yeah, I think we touched upon that a little bit earlier. Because you have 2 extra squads, you have 8 extra players in the lobby every single time. If you have one strong position, that position becomes even more valuable because you can capitalize on so many more extra eliminations off the back of that spot. So Team Falcons here get himself 15 eliminations, 15 placement points, good 50-50 split that you love to see. And really, we said it, there's only 2 teams that can really catch up to Vampire today because they've been consistent so far. And if they get a good finish, they could potentially overtake the first place. It is Falcons and Stalwart. And Falcons, they're looking really dangerous right now. And the edge play, they're currently on top. I feel so bad for giving you such a hard time, Max, coming to this event. Because I will say this, you were saying Team Falcons is a team to watch out for. Overall, we are waiting. I was like, no way. Come on. You got Reagan's coming in from China. Like, Chinese teams have always been phenomenal. And yet we're seeing them match in, match out, consistently have this performance. It makes me shut up. While we had them join the media days, and they were just they were super happy. They were just overjoyed to be present at this event too. And also their coach, Joy Boy, is doing a great amount of work and research for the team. Like, they are feeling confident. If they don't get the win, I think they'll be like, oh, okay, it's cool. We still tried our best, but they are a team that's here to have fun. And I talked with Damar, like, he has this little thing, like, to say, like, easy every single time he gets a win. So I'll show it once we're on camera, but they're feeling good. I think it's also a great boon for them as well, playing in front of a home crowd effectively. So many fans out there. We heard those final moments as Falcons isn't even necessarily, they don't even have the win secured just yet, but you can still hear them going crazy, knowing that Falcons is approaching the win, right? And then when they get it, they're absolutely fanatical about supporting this team. So I think for Falcons, that's going to be an extreme morale boost. Not only the fact that they're playing these edge plays, getting conversions, on but also the fact that they have the home crowd with them, and that will pay dividends moving into the next days. It is like the 5th man, right? 5th or 6th man. I mean, depending on how you look at it. We got a lot of subs in PubG Mobile. we definitely do. 7th, 8th man. I don't know. Well, we are talking a lot about Team Falcons. Why don't we actually take a look into them once again here, and maybe Never Alone can hit some basketball shots this time. Uh, 2018. Okay, nice. I think it's in Dubai Star Challenge. Won by RRQ. Okay. 2022, maybe 200 million. That's close to $1 billion. Is it Livic? Okay. EWM. Like 1,200. 800? Okay, I thought it was more than 1,000.
I forgot its name, but it has a McLaren skin, Lamborghini skin. I forgot its name. The coupe, yeah, jet ski or something. Bike, buggy, motorcycle. Does it count? McLaren. Mobile, yeah. Fine. Classic match, it's 100. In tournament lobby, it's 64. The location is in Dubai. Prize pool is probably 4 million, 3 million, 2 million. I thought it was a lot. Winner, Nova spot. The winner is the Team Falcons. He's right. there was the first question in there, I believe, right? When was the first official LAN? And you were quite angry by his answer, weren't you? Well, you know, quite angry. It wasn't really the first one, but I was there. Seven was there in Dubai. 4-star challenge. It's a good time. We had a power outage for a moment, but we were fixed. We had a impromptu talent show. If Seven remembers, he's laughing in the distance. I can see him. It was interesting. Could be worse. It could be championships in breakdancing. It's impressive. Actually, Zute might have been first, but Avenger was second. Yeah, I don't think Zute was born in हिंदी लगाओ पक्का Actually, I think I might be right. देखते हैं एक मैच अंग्रेजी में देखते हैं अंग्रेजी में देखते हैं समझ आता कि नहीं. All right, ladies and gentlemen, we're having a lot of fun here. I want to give once again a shout out to Savvy as they have been putting this entire event on for us and making sure it is possible and making sure that they can bring us here today to make it entertaining for all of you guys. क्या लगता है? Because of course that is what the show is about. Us. I'm kidding. Obviously about the players. Let's take a look at the overall settings level, get an idea of where the teams do stand. And Vampire still have the lead, but not by that much. That is way closer than I expected initially. That was a 30-point game they just got, right? And they were consistent all day. Again, there. It's rare you see two teams kind of stand out quite the way these two teams have, which is extremely impressive. Normally you only get one, and normally they end up with something ridiculous like a 30-point over second place, and then teams have to do the catch-up. However, Team Falcons being 70 points deep, whilst Vampire Esports has done what they have done so far, that is a testament. Team's done. Yeah, they have 2 more days to play, but what I'm talking about is when you're done with this final match today, your job isn't done for the day. You have so much review to do. You have so much. It will impact them as much as we think, but it's their job to do the research, not mine. So we'll see. Potentially. Well, gentlemen, we did talk about 52 Esports being at the bottom of the table before that last match. They've actually jumped up to 13th place. But Max, you talked about this before, right? Yes, there is a large lead towards the top, but that means the teams in the middle and down towards the bottom of the pack are extremely close. So one good match can shoot you up. However, 1 or 2 bad matches, as Nicholas Galaxy's case, can drop you back down to second to last. But one team that surprised me here, of course, particularly by winning the East League, and now they're in 16th place. I think the lobbies have been a little bit chaotic so far here across our 5 games. I think Damwon Kia is a team that doesn't necessarily thrive in chaos. They thrive in the planned. They thrive in being able to control positions. And right now, that's not happening and not going their way here so far. So maybe as Vegas go on, but as Max says, it's a short period of time to try that. Exactly. It's going to be pretty hard for them. I'm actually impressed at, not impressed, I'm surprised that Aton are not as any higher on the leaderboards because they brought Senatexa to the table, right? And I was like, well, Senatexa, that's a big addition. He's got LAN experience. He has played internationally against some of the best teams in the world. Like, that could help the team step up. Like we saw as like S2G in the past, Silas. It does help out. But so far, no success has been seen. I mean, the question comes, how do they utilize him, right? Yeah, you can bring the best player in the team, but it doesn't necessarily come down to individual skill. A lot of times comes down to, well, are they making him play the style of his team? Are they changing the team's play style towards him? How are things synergizing? Like, there's a lot of other factors besides just bringing, all right, give me Ryzen. All right, now I'm on the best team in the world. It doesn't work like that. I have the impression of good examples to demonstrate this S2G where they brought Silas to a roster of teams of like technically no names, right? And his playstyle, his knowledge is spread to the team, and now every single player can say of S2G, like Kelsey, are just standout players of their region. I think that's how you should have one player just like a star join a team, is have him educate the rest of your squad and level up the team as a whole. That's fair, because when I was watching their region, I felt like maybe S2G could have even qualified. It was very close to actually getting to this portion of the tournament. They will be in the after party. Good point.
All right, well, ladies and gentlemen, it's our final match today, but not before I remind you guys about the meme contest that is currently still happening. You guys can change your profile. The meme contest is another contest where you change your profile picture on your Instagram, your Facebook, whatever it might be, to your favorite team, and make sure you're commenting on the official channels to get to win a prize. But also, you can make your own memes. I'm hoping Maxman makes them because he has very good ideas when it comes to that. And if you guys post on your own pages, making sure to tag PubG Mobile Sports, you will be able to also have a chance to get a win. We got a minute left, as you can see, to the top right-hand side. It's going to be Aaron Gell to finish off the day, and it's going to be none other than the handsome gentleman, albeit one taller than the other, 7 world champion, and Avenger. Yeah, and it's not even close. He's taller by like a lot. Yeah, I mean, you can't really do anything about it. I say it to my face. I got it in here to the world like that, right? So you can't do much. Sometimes you're tall, sometimes you're not so tall, but you're fantastic hand waving, right? So it's beautiful. I'm just happy the camera didn't show us when I'm in the middle of Avenger and Jason. Because if the camera does show, I'm just gonna look so short. And to be honest, I'm actually standing on a box, so yeah, it's a lie. My height is a lie right now. Yeah, you look tall, but all right, let's see. Let's see if we can make magic happen. Oh, look at that! Oh. wait for it. Oh, even smaller, but you're fantastic in a way. I'm fun size. I'm fun size, okay? You're fun size, right? Fantastic. Thank you so much, Jason, for stepping in for the basketball contest. But we have the last game of today. It's going to be our third and last. Let's go Angle. Interesting होगा. The last game of the day. Goal अच्छा जाएगा. Angle अच्छा खेल रही है goal. So far, we've seen some very impressive goal moments. का angle अच्छा जाता है. दोनों वाली angle अच्छे गए. इस बार भी जाएगा. Question for you. ए भगवान मुझे बेशक सिंगल रखना लेकिन सेटिंग उसकी भी मत होने देना. वाव. Yes or no? तुम्हारा लगी चल रहा है. Deep down I want. In this upcoming era go. On this upcoming era. Ooh. They got out first place. Chalo. The first with 24 ilms, and then a second place with 13. No. They get a top 3 in this next era go. I must say no. We're gonna break it, and I think they're full gonna chicken here. But you're also gonna see 100% feeling. मजाक भी नहीं कर रहा. This one obviously brought to you. 100% Thank you so much for joining us. But this plane path here, it's gonna go over the southwestern side on the military base here, Seven, and it's gonna go over to Georgia Pole. There's so much talking as Naya. सपोर्ट कर रहे हैं सबके फैंस. अपने दिलों को थाम लीजिए. लीडर बोर्ड के ऊपर टॉप 3 टीम्स कंप्लीटली सेफ हैं, लेकिन पहला मैच, आखिरी मैच इस दिन का आगाज लेकर जा चुका है. थैंक यू सो मच एक्सपीरिया. ऑफिशियल स्मार्टफोन हमारे स्पॉन्सर रहेंगे. और एहसन, क्या आपसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ? इजाजत है मुझे आपसे कोई सवाल करने की? जी बिल्कुल इजाजत है आपको. आप परेशान हो, आप खुल के सवाल करें. सवाल करें. नहीं मैं बिल्कुल एहतियात से करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम अगर प्लेन पाती ये शेल्टर, प्रिजन, मैंशन और लिपोवका ये कुछ एरियाज रहेंगे जो कि रीचेबल नहीं रहने वाले. गाड़ियां लेकर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए आप जा सकते हैं. नोवो रिपनॉय ऑलवेज रीचेबल. टीम स्टॉलवर्ट ई स्पोर्ट्स अच्छा ग्लाइड करती हुई पहुंच जाएगी. और सर्कल पर क्या ख्याल आते हैं हसन? सर्कल किस जानिब जाएगा? I believe जिस तरह का प्लेन पाथ है, सर्कल ऑपोजिट साइड सर्कल जाएगा. ये सारे सर्कल हमें बनता हुआ नजर आता है. स्टैल्बर इंक्लूड रहता है नॉर्दर्न साइड के ऊपर, जो और इसमें ओमेगा रोटेट भी स्लो करता है. तो अगर सर्कल आदि जस्ट इमेजिन ये स्नाया की ईस्टर्न साइड पे ये सर्कल ओमेगा इस बार बैन चुप घुसा दे अंदर एंड लिपोवका, तो फिर बैक टू बैक का सामना ये टीम बॉक्स के ट्रस्मी के सामने के साथ होता हुआ शॉट गन आते साथ ही पटका दिया जाता है उनकी तरफ से, और कहा जाता है ठंडी खाओ मेरे दोस्त. 2 गोलियां फिर से रीलोड की जाती है उनकी तरफ से. एक दफा फिर प्लेयर जाएंगे. आई बिलीव यहां पर सेम टू सेम जो है वो मुझे फील ऐसी आ रही है कि जैसे बॉक्स इज ओवर. एग्जीक्यूशन और क्या पीक थी वो. शॉटगन साथ ही साथ यहाँ पर टॉमी. अगेन मुझे लग रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ या फिर ओल्ड आई वुड से कि काउबॉय स्टाइल मूवीज जो है वो यहाँ पर ग्राउंड की तरह थ्रो किया जाता है यहाँ पर बैक टू बैक के प्लेयर्स को आरएसजी की तरफ से. एंड बैक टू बैक की पोजीशन रिवील
फील्ड है। आरएसजी के प्लेयर्स पुश करेंगे उनके ऊपर एंड आई लव दिस एग्रेसिव पुशेस फ्रॉम आरएसजी। आज अपनी शॉटगन रीलोड करते हुए उनकी आवाज आ रही है हमें एंड जैसे ही प्लेयर्स यहां पर पुश करेंगे एक साथ पुश किया जाएगा। एक प्लेयर को डिवाइस मार दिया, दूसरे को डीबीएस के साथ क्या खरीद। चलो भाई बहुत भाई 64 बंदे रहेगा, एडवांटेज है पता है, ये गेम निकाल सकते हैं। ये होता है आदि जब टीम्स कोशिश करती हैं कि अब चाइनीज टीम तो इतना एक्सपर्ट है ना थर्ड पार्टी में, बैन चोद करके। सिचुएशन अच्छी है, 4 एलिमिनेशंस वो लेकर ही गए आदि। एसन इस स्क्वाड की सिर्फ एक ही कमजोरी है और ये हमेशा हर मैच के अंदर ड्यूरिंग द रोटेशंस पिक ऑफ किए जाते हैं। सिर्फ यही कमजोरी है क्योंकि जो टैलेंट अभी बैक टू बैक के प्लेयर दिखा कर गए हैं वो हर किसी में नहीं होता। मैं अभी भी हजम नहीं कर पा रहा, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उस पीक को। जैसे उन्होंने भाई वो मैं भी नहीं के प्लेयर वहीं से ही आएगा। ऑब्वियसली आपको फुटस्टेप्स नहीं आते, सो इट्स अ लॉन्ग गॉन स्टोरी। आपको फुटस्टेप्स नहीं आते, आप इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आपको श्योरिटी नहीं होती। लेकिन स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग उन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया कि प्लेयर वहीं से ही आएंगे। तो और क्या भाई बहुत गंदे गंदे हिट मारे उन्होंने। आई फील सैड, मैं अफसुर्दा हूं। मैं देखना चाहता था इस एग्रेशन को, इस मोमेंटम को आगे बढ़ते हुए, लेकिन दैट वाज थोड़ी सी बैड लक का सामना उनको करना पड़ा और वो ड्यूरिंग द रोटेशन वंस अगेन कंप्लीट स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है। टीम फाल्कन्स वन ऑफ द प्रॉमिसिंग नेम्स आउट देयर।